तो आज एक प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में इतना ही पता है, इसके अंदर एक लैपटॉप है। तो एज यूजुअली आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए कनाडियन फर्म। So for last time, the product of laptop for my programming purpose sent from Canada. What happened there? Because of lot of custom charges, it was almost 40,000 for custom charges. So now my company decided to send the product from the office of Thailand. So the product came from Thailand, and the company told it's a laptop from Dell. Okay, I know that much only, but let's see what is inside. For the custom charges, I'm telling in short. While this ship the product from Bangkok, Thailand, for shipment for Indian currency, they put 10,000 rupees, and while I'm receiving this product, I spend 21,000 for receiving this product. Means almost for from beginning to end, for transport, shipping, and as well as custom duty, it took almost 31,000 for this particular laptop, and that's it only. And let's see in the box what is inside. तो अभी देखिए डेल का जो मॉडल यहाँ पर इसका अंदर है, ये मॉडल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट कनाडा में यूएसए में मिलता है, वो प्रोडक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद आता है। जैसे मेरा पिछले वाले लैपटॉप में क्या हुआ था, जो भेजा था वहाँ पर विद एसएसडी, और वो 4 इयर्स से वो हम एसएसडी का यूज़ करना स्टार्ट किए, ठीक है। एंड जो भी वहाँ पर भेजा था, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट लास्ट ईयर हम आई थॉट लॉन्च इन इंडिया एसएसडी। सो सेम स्टोरी हियर। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फॉर द कस्टम ड्यूटीज यू मेंशन हियर, Anurag Bohong, my CEO of company, and they sent from Thailand. Okay, Thailand, and for is my name, my address is there, and for this product is used product. Okay, it's not a newly purchased product, so it's used product. Because of that, they mentioned the value of the unit value is 300 USD, means the value of the product is 24,000, but in India I received with the 21,000 of custom duty. It's a huge. So I asked the DHL for the custom duty why they are charging so much. They mentioned because I'm purchasing this product, a finished product from USA, from outside of India or Canada, or outside of India, Thailand. Because of that, they are charging that much of money. So it's whatever I'm checking here is not open in India, because in this section mentioned here, see, this is the document. This is document from Thailand. Okay, and the product is not the seal is not open yet. तो यहाँ पर ओपन नहीं हुआ था। इवन सिक्योरिटी चेकअप में जो मेरा कंपनी सीईओ का सिग्नेचर है, तो यहाँ पर कोई भी सील ओपन नहीं है, मतलब कस्टम यहाँ पर खोल के नहीं दिखा। तो मगर इसके ऊपर चार्ज लगा दिया, ऑलमोस्ट 75% चार्ज लगा दिया। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। आई एम सो मच एक्साइटेड, व्हाट इनसाइड आई डोंट नो। लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट आया था ऑलमोस्ट 4 इयर्स एगो, उस टाइम क्या था, इतना अच्छा पैकेजिंग नहीं था। मगर अभी जो प्रोडक्ट अभी मुझको मिल रहा है, इतना अच्छा पैकेजिंग है, हम सोच नहीं सकते। And last time for custom check they took lot of time to clearance, but for this case they already deliver in time. और लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पर जो सील ओपन था, तो हमको ओपन करने की ज़रूरत नहीं था, मगर अभी सील पूरा सील है प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत अच्छा सीलिंग है।
ये लैपटॉप है, ठीक है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ जो एक्स्ट्रा एडेड है ये वाला चार्जिंग सॉकेट, इतना बड़ा चार्जिंग सॉकेट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी and obviously this is for US Canada standard, so I need to buy a socket for universal socket for using this particular product, a new type of socket, so I have to purchase. बहुत भारी है, बहुत भारी है। और जो रैपिंग है इसका, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, एक कपड़ों का है और ये मैट फिनिश है, थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अभी इसका जो इसका लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट था ओपन किया था, इतना अच्छा नहीं था, पूरा ओपन था। और अभी पहले तो एक चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, न्यूली फर्स्ट टाइम, टू गुड एंड पता नहीं है, मगर ये ऐसा चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग केबल ऐसे पहले हम नहीं देखा था डेल का। बोला है ये यूज प्रोडक्ट है, मगर हमको पता समझ नहीं आ रहा है सील प्रोडक्ट है कि यूज प्रोडक्ट है, तो वो लग रहा है सील प्रोडक्ट है। खरीद के भेज दिया, ये पूरा सील है। अभी इन दिस ओके, ये ऐसा प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट काउंसिल का वहाँ पर FCS के सर्टिफाइड है, कैलिफोर्निया से पैकेजिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा। कैलिफोर्निया से पैकेजिंग होके आ रहा है। क्या है लैपटॉप है, क्या है? पता नहीं है क्या है, कुछ तो है, मुझे नहीं पता ऐसा। शायद ये वाला लैपटॉप भी है ना। मैनुअल लैपटॉप, ओके। I think it's not Dell, right? Because no logo of Dell. न्यू कंपनी। इसको बॉक्स का ना क्या है देखते हैं, बहुत भारी है बाय द वे। इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट डेल का नहीं है बाय द वे, ये प्रोडक्ट का नाम है रेजर ब्लेड। देखिए रेजर ब्लेड है। I don't even know that this product service is available in India or not. It's a newly product. कुछ स्टिकर वगैरह है यहाँ पर, स्टिकर पर कुछ है। I'm really surprised. क्या है? The first time in India. By the way, you can purchase from Canada. It's all fine, but you need to pay the duty. But that's something special. साइड में रखते हैं सब कुछ, डॉक्यूमेंट साइड में रखते हैं। How to open?
तो ओपन हुआ, ओके पूरा फोल्ड नहीं होता, इतना ही तक जाता है। जो मेरा पिछले वाला रियल का लैपटॉप था पूरा फोल्ड हो जाता था। लेट्स स्टार्ट, सी द कलर ग्रीन, ऑसम। I don't know the product service is available in India or not. The Razer, the company name is Razer. It's start opening. Color change See, the color is changing. If while I started the laptop, it was green, then changed to blue, now off white, light white. Now it's a rainbow color, right? Rainbow color. Rainbow color. It's rainbow color. ये जो लैपटॉप है रेजर कंपनी का है। तो जितना आपको पहले बोला था, डेल नहीं है, ये रेजर कंपनी का लैपटॉप है। और जो लैपटॉप का जो कैटेगरी है, ये ब्लेड कैटेगरी है। और ब्लेड कैटेगरी के अंदर बहुत सारे रेंज आता है। जो ये वाला रेंज है, ये वाला ब्लेड 15 एडवांस गेमिंग लैपटॉप। तो ये एक गेमिंग लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप क्यों है? बाय द वे, इस लैपटॉप का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देता हूँ यहाँ पर। कोर i7 9th जनरेशन का प्रोसेसर है। और इसके अंदर जो DDR5 16 GB रैम है। और इसके साथ Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड, जो 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड, वो भी अवेलेबल है इसके अंदर। और 1 TB SSD है सैमसंग का। तो ये ओवरऑल का कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप का। और जितना प्राइस हमने देखा, Amazon में इसका प्राइस दिखा रहा है यही सेम प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड लाइक USA। So this product price है 3.36 lakhs rupees। So इसका इतना ही प्राइस है। और वहाँ पर Amazon में अवेलेबल है प्रोडक्ट। मगर दिस प्रोडक्ट इज कंपनी, द ब्लेड कंपनी, रेजर कंपनी इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, they are importing from outside. So before you buy, think multiple time to and take a right decision. अभी देखिए, तो यहाँ पर तो दिखा दिया है इतना कुछ। अभी इसका तो ऐसे है, मगर इसमें नीचे अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे। मगर आप पहले आपको एक बार दिखा देते एक चीज। नीचे जो फैन है, देखिए फैन है, ऐसा फैन है तो बाहर से दिख रहा है। एंड यहाँ पर फैन है, बहुत सारे फैन है, मतलब कूलिंग के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए एक 3.5 जैक है, एक पावर कॉर्ड है। और यहाँ पर देखिए दो टाइप सी पोर्ट है। इट्स नॉट टाइप सी पोर्ट, इट्स अ टाइप ए पोर्ट फॉर USB चार्ज। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर HDMI पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, और एक टाइप ए पोर्ट। और आई थिंक इट्स समथिंग डिफरेंट, आई डोंट नो, आई विल रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू। First of all, this is a complete unboxing, and I don't know what other things are there because this type of product is not available in India. So it's the first time in India, and you are the guy who enjoyed this video first time for this particular product. And for complexity of duty and charges, I already explained to you how to import the product. If it is a packed sealed product, it is electronic product from outside. Better to take proper decision, because if you buy the product more than 50,000 amount, you will pay more than 70% of duty, initial duty, and then the GST. So lot of money to spend over there. So stay from this away. Better buy the product from India so that you can save your hard-earned money. And अभी ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसका रिव्यू नेक्स्ट में आएगा। सब्सक्राइब द चैनल, देन शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और एक चीज, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो आएगा, परफॉर्मेंस वीडियो आएगा, वो चैनल में आएगा।
So let's tune to the next video.